কি বলছিল? দেখো, x is, see, look here, look, so how important. So x is coordinate of a particle at time t. Okay, तो ना ये देखो, तो ये ग्राफ अगर ड्रॉ किया, ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये देखो ऐसे धूप, देखिए क्या लग रहा है, बताओ, देखिए क्या लग रहा है, व्हाट डू यू सी हियर, शो मिली, Yes, sir. हाँ, व्हाट डू यू थिंक हियर, मेनी पीपल विल थिंक, आई विल टेल यू, देयर इज अ हिल एंड अ पार्टिकल इज मूविंग, मैंने एकदम This पहाड़ is से गाड़ी लेके ऐसे ऐसे चल रहा है, गिर जाएगा, हैंड ब्रेक लगा भाई, तो इज इट रियली सो? यस, a या, graph of velocity. हाँ, it is a x coordinate, that means particle is moving in a straight line. ये स्लोप के ऊपर नहीं चल रहा है, ये ग्राफ स्लोप के ऊपर चल रहा है. Here is x and here is time. See, with time x is increasing. ठीक है, अब देखो, now let us take any time, say t1, at t1 it is x1, and let's take another time t2, and this is x2, this is x2. X is a coordinate of a particle. So how much is this? T1, and how much is this? T2. ठीक है, T1 and T2. Now, what is this actually? X2 minus X1 by T2 minus T1. What is that? हाँ, वो तो स्लोप है, हाँ, क्लास 9 है फॉर्मूला, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, बट this change in the coordinate by change in time, what is that? Velocity. And here it is velocity, actually x is coordinate, displacement is change in coordinate, velocity in time interval t1 to t2, है ना, from time t1 to t2, this is the displacement x2 minus x1, hey, this x2 minus x1, and this is t2 minus t1. So isn't it x2 minus x1 by t2 minus t1 is what? Data different. X2 minus x1 is the displacement in the time t2 minus t. If you take any time interval, the displacement divided by time interval, it is same, constant. So this displacement divided by time interval is constant. That means it shows that, what is that? It is, the velocity is uniform, constant. That is, velocity is constant. Yeah, velocity is constant. Got the point? Huh? No calculus is good. What? Calculus er kono term likhechi ami na. Have I written any term on calculus? So this overhyping, marketing, sales, promotion, I don't need it. Yeah. Corporate communication, branding. No, calculus doesn't need any branding. We learn the basic calculus concept without learning the jargon, big words. सब एक किच्छु नहीं. All is empty actually. अच्छा,
So that means, see, that means if x versus t is a straight line, graph x versus t is a straight line, that implies what? Velocity is constant. That is acceleration is zero. Implies acceleration is acha. What does this prove? This graph, এটাও তো straight line. Yes. What is the slope, you know? The slope is this, tan of this theta. So tan theta is velocity, that is negative. What is the meaning of negative? देखो जितना टाइम जा रहा है आगे उतना x डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ना, वेलोसिटी डिक्रीज ना, वेलोसिटी कांस्टेंट, पार्टिकल मूविंग अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। समझे क्या? पार्टिकल देखो यही है, this time this is the value of x. Next, this time this is the value of x. So with increase, time will always increase. Okay, बुरा ही होता है, इंसान मरता है, बचपन में नहीं आता कभी, पार्टिकल भी नहीं जाता. So time always increase. एक मिनट, time always increases. Okay, time increasing and x decreasing. What does that mean? x decreasing बोले तो क्या है? x axis ये देखो, x decreasing, कभी यहाँ, मतलब what? Where is the particle moving? Towards negative direction of x. Got it, na? It is tan of this theta. না না, এই তো একই অ্যাঙ্গেল, এটা তো একই. All of you understood? Yes, এক sir. মিনিট, হ্যাঁ. আর ঐশিক, হ্যাঁ ঐশিক স্যার, সাহা, হ্যাঁ স্যার বুঝে গেছি স্যার। দেবায়ন ব্যানার্জি, understood? Yes, sir. Suhani, Shalini, all Yes, sir. understood? Okay. Got it ना? Got it तो देखो, तो x वर्सेस देखो, ग्राफ, ग्राफ समझना चाहिए पहले, ग्राफ नहीं समझा तो पूरा कुछ नहीं है. What is the meaning of this? What is constant? पार्टिकल प्लेन पे जा रहा है गाड़ी, Sir, the velocity is zero and the particle is at the same position. particle is at rest. Very good. Yes, particle is at rest because now you will say no, why displacement? अरे ये displacement नहीं है, क्या है? Coordinate है, coordinate system is my choice. हाँ, so this displacement is zero actually because है ये टाइम पे x का वैल्यू जो है, ये टाइम पे x का वैल्यू जो है, मतलब x गो भी है, ये खड़ा है, car is parked there, time passes, car doesn't move, stationary. ठीक, next page. Shall I go to next page? Good. देखो, I will explain it so simply, in so simple manner that you will, now in books you will find out jargon, starting say notation, a feel good factor that you know many things, but not needed actually. Branding promotion छोड़ो, branding promotion नहीं सीखना चाहिए. ये देखो, suppose time and x, बताओ तो यहाँ पे क्या हो रहा है?
क्या हो रहा है? खैर, what is this? Stationary. What is this? What is velocity in this region? You know, here v1 is tan theta 1, and what is here? V naught here is 0, v1. Now, in this interval, what is velocity? Tan theta. No, no, no. सब ना बोललाम ना ब्रांडिंग प्रमोशन नहीं है हमारे पास सब सिंपल ब्रांडिंग प्रमोशन जीरो एकदम सब सिंपल एकदम लो ये ग्लास में डालो पी जाओ एकदम सिंपल है हाँ फिजिक्स ऐसे पी जाओ फिजिक्स জল জল ইজি है জলের মতো easy। ये देखो माने इंटरवल्स डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम क्या है वेलोसिटी चेंजिंग है ना अब देखो इसी का एक वर्जन है एक समझदार है जो इशारा काफी है उसके लिए समझदार है जो इशारा काफी क्या समझो It accelerated. here also in this graph you have distinct intervals here also intervals are there but very small almost is tangent yes so very small intervals ये there इधर पे जो interval है a very small interval no extremely small interval and so this is what a very small change in x delta x and this small change so delta x but so here this अच्छा व्हाट इज दिस थीटा ये देखो ये थीटा है इसको अगर स्ट्रेच कर दिया क्या बनेगा टेंजेंट ये भी थीटा समझे डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट श्योर I taken this I have taken this very small interval delta t মানে fraction of a second x টা কি delta x এই মানে এই চেঞ্জ ইন x very minor distance ছোট distance delta x by delta আবার বলছি ওসব ব্র্যান্ডিং এর কথা নেই আমার কাছে এপসাইলন হঠাৎ করে আমার এমনি হচ্ছে না আমার গ্রিক কেন ভাই এক ইংলিশ রাজত্ব করে হলো না দেশে গ্রিকদের দরকার নেই ফুটিয়ে দিয়েছি বন্ধু শত্রু সব বন্ধু বন্ধু বন্দুক হয়ে গেছে বন্ধু কেউ না আচ্ছা এটা delta x by delta t what is that see small intervals the velocities so this delta x by delta t actually very small you write it like this actually dx by dt सुनो सिमिलैरिटी समझना डायनासोर छोटा होता है क्या होता है पता है कोमोडो ड्रैगन छोटा होता है क्या होता है लिजर्ड होता है ठीक है शेर छोटा होता है क्या होता है बिल्ली है तो डेल्टा एक्स छोटा होता है तो क्या होता है dx होता है ठीक है it is not d multiplied by x no dx means a small increment in x change dx also change in x but very small now this you call what this v this is the instantaneous velocity that is yes momentary instantaneous velocity so what is instantaneous velocity is the tangent to the curve समझे এটা তো ট্যানজেন্টই হলো নাকি these two points are so
tangent to the point, tangent to the curve at a point, tangent to the curve at a point. ये আবার অন্যদিকে না ঘুরে যায় খেলা, ট্যানজেন্ট মানে ট্যানজেন্ট একবার টাচ করবে, ঠিক আছে, খেলা আমি ঘোরাবো না, गेम दूसरी तरह घूम जाएगा वो रियल नंबर ये आना ये वो फलाना वो नहीं, सिंपल टेंजेंट टेंजेंट. अच्छा, so what about this here, if you take a time, take a small interval ना भाई, small interval लेना, हाँ देखो this dx by dt ना small, हाँ टेंजेंट, अरे ना रे बाबू शुरू नहीं किया हमने ना, b dash is what, tan theta dash, this is class 10 level actually. What I have done, this instead of this large gaps, I have decreased the gaps. Instead of this large gap, I have made it continuous, means small straight lines make a curve like that. Acha. So this is what, tan theta dash. So what does this graph represent? You know, this x versus t graph देख के क्या लगता है? This x versus t. So acceleration. And velocity. Tan theta is b. Tan theta is b. That is the small change in x by small change in t, dx by dt. समझे? So this is slope of tangent at a point. On the curve. Slope of tangent at a point on the curve. Okay. That means this means increasing velocity. This graph means increasing velocity. नहीं बाप रे, कर्व कैसे समझेगा रे? ट्रेंड समझो ना, ट्रेंड. ये देखो स्मूथ कर्व है, अगर ऐसे होता तो क्या होता? बात तो सेम है ना, velocity less, gradually increasing. It is happening continuously ना, ठीक तो minute level মানে every point velocity is changed. না সেটা তো ডিপেন্ড করছে, that depends on the driver who is driving the car, who has the steering and the accelerator, depends on that person. So if I drive at constant speed, look at the speed meter, constant, then suddenly accelerator, here constant, about depends on me. And if I drive like this, always pressing this accelerator, और करो, that means like this, ना, ठीक, okay? And if the accelerator is pressed एकदम, then okay, same speed ना. If you press it, you don't know driving. How can I explain that? In some long distance buses, पता है क्या करता है? रात में सो जाता है तो ड्राइवर इतना नींद आता है, एक ईंट लाता है, फिर एक्सीलरेटर को चबा देता है, बाकी नहीं, बाकी लाख पे है ना. That is long distance bus, you know, long distance. Earlier there was a bus from Calcutta to Siliguri, rocket bus, rocket. I don't know whether it is running there or not. Rocket bus. We used to say that actually that there is one more bus, L238. Yes. That is known as KB. I have named it KB, killer bus. That also does the same thing. एक पत्थर लाता है ऐसे, फिर एक्सीलरेटर को डाल आराम से. L238. If you have traveled in that area, that Moddamgram, that is such long distance. Okay, चलो. ग्राफ तो समझ में आ जाए,
बताओ तो ये व्हाट अबाउट दिस ग्राफ? एक्सीलरेटिंग नाउ। এই দেবায়ন বল দেখি কি হবে এটা? স্যার ফার্স্টে স্যার স্পিড কনস্ট্যান্ট ছিল, তারপর স্যার রেস্টে চলে গেছে বডি। হ্যাঁ, এটা কে বললো? ঐশী। আর এই দেবায়ন কি হবে এটা? দেবায়ন না দেবিয়ান, তাই তো? না এই তো না। এই যে এটা কি হচ্ছে? এটা ভেলোসিটি বাড়ছে না কমছে? ভেলোসিটি velocity decreasing. See, if you see an interval, see here, look at a same interval, displacement is more, and later on, if you take the same interval, displacement is less. Huh? Such is the graph. ठीक है? माने here it is what? Decelerating. समझे? Decelerating क्यों? ओके। स्लोप, ये देखो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यू सी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, सी tan theta, v equal to tan theta. What is that? Decreasing, ना? हाँ, v equal to tan theta, so tan theta decreases. Up to this, it is okay. Sure, understood everything. Clear though concept. See, velocity at the top point is how much? Here. If I draw the graph like this, what does it represent? About what is velocity here? 0. See, slope देखो slope, और slope तो फिर भी थोड़ा हाई फाई हो गया, but what is the angle made by the tangent with t axis 0? और ये देखो एक as time goes on, x remains same. As time goes on, x remains same. That means it is a race. Particle stops. ग्राफ देख के ऐसा मत समझो पहाड़ के ऊपर जाके ड्राइवर चला रहा है आराम से, ना रे बाबू. It is not a physical hill actually. It is the x versus t graph. Breaking down and then remains at rest. Exactly. Okay, okay. কোনো ব্যাপার না। কোনটা?